अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आज हम लॉ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन 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 लोग थे, एंड अभी ये सब्जेक्ट हमें किन किन सोशल चैलेंजेस को समझने में हेल्प कर सकता है। तो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू दिस। और लॉ एंड डेवलपमेंट बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे लॉ एंड डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट, जिसके बारे में सो लॉ एंड डेवलपमेंट एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है। इंटरडिसिप्लिन से मुराद ये है कि ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का मजमूआ है, जिसके अंदर आप सोशल साइंस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट से मदद लेते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है, लॉ भी है। और उन सब को समझने की थ्रू आप लॉ एंड डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। So it examines the relationship between law and development and analyzes how to use law as an instrument to promote economic and social development. So इसका जो बुनियादी मकसद है इस सब्जेक्ट का, ये समझने की कोशिश करता है कि हम लॉ को एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज एन आला कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें। सो ये जो आइडिया है लॉ का इस्तेमाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये तो 250 साल पुराना है, जिसके अंदर एडम स्मिथ ने अपने लेक्चर्स में इसको पहली दफा इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरह से लॉ की मदद से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अचीव कर सकते हैं। सो उसका एक कोट है इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स, जिसके अंदर उन्होंने कहा था, द इम्परफेक्शन ऑफ लॉ and the uncertainty in its application was a factor that retarded commerce. उन्होंने इस बात की तरफ हिंट करने की कोशिश की है कि लॉ कितना क्रिटिकल है इकोनॉमिक एफर्ट्स को इंश्योर करने में, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंश्योर करने में। मैक्स वेबर एंड अनदर फेमस sociologist, philosopher of the late 19th and early 20th century, explained the importance of rational law in economy and society. So it dealt with how you can rationalize law, जिसकी मदद से आप बेहतर माशरे की तरक्की भी कर सकते हैं, जिसके साथ साथ माशी भी और समाजी तरक्की भी हो सकती है। Another famous sociologist, Frederick, a prominent Harvard University economist of the 20th century, studied relevant legal concept to support liberty as the prerequisite for development. So ये वो classical philosopher हैं जो कि हमें बहुत start में हिंट करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड डेवलपमेंट, और किस किस तरह से हम लॉ एंड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को बेहतर समझ सकते हैं। इसकी जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, सो देयर वाज अ स्पेसिफिक मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड, जिसने इस एज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड डेवलपमेंट को परवान चढ़ाई। और पीपल नाउ वी आर आल्सो स्टडीइंग दिस लॉ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट जो हमें हर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना पड़ता है, स्पेशली अगर आप डेवलपमेंट स्टडीज के स्टूडेंट हैं। So law and development studies originated largely as a product of development assistance activities by the United States government. So international इदारों ने, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक शामिल है, प्राइवेट फाउंडेशंस शामिल है, उन्होंने लॉ की एप्लीकेशन इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस आइडिया को प्रमोट किया, इस आइडिया के साथ प्ले अराउंड किया, जिसके अंदर स्पेशली जितना दिस वाज द आइडिया वाज कि जितनी बेहतर आपकी लॉ लीगल इंस्टीट्यूशन होंगे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, उतनी ही बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सो आप यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट पोरिंग इन मनी, हीप्स ऑफ मनी इनटू डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज उससे कोई रिजल्ट आ नहीं रहा। तो जो बाकी इदारों ने, दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट जो कि जिस पर इसके बाद में स्पॉन्सर भी हुआ, सपोर्ट भी किया, एंड दिस इज हाउ इट सॉर्ट ऑफ एग्रीवेटेड, जिसके अंदर लॉ को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझा गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए। 1960 की दिहाई में सम अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, फोर्ड फाउंडेशन है, स्पॉन्सर्ड द लॉ रिफॉर्म इन डेवलपिंग कंट्रीज। और उसके बाद जो लीगल स्कॉलर्स हैं फ्रॉम लीडिंग अमेरिकन लॉ स्कूल, दे रोट मेनी आर्टिकल, जिसके अंदर उन्होंने पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाने की कोशिश की कि कितना ही बेहतर लॉ होगा, उतनी ही बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। इसने और इनकरेज किया जो डोनर एजेंसी थी, जो फंड देने वाले इदारे थे डेवलपिंग कंट्रीज को, कि वो लॉ की एप्लीकेशन को और मजबूत से मजबूत करें डेवलपिंग कंट्रीज में, तभी हम आपको और पैसा भी देंगे। सो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक कि आप XYZ लॉ में तब्दीलियां करें अपने मुल्क में, देन हम आपको
इतनी पेमेंट देंगे. सो लॉ वाज सॉर्ट ऑफ टाइड इन एज इट वाज सॉर्ट ऑफ अ टाइड एज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को दी जा रही थी. So law and development studies were never well integrated or monolithic, but at a very general level, most of the scholars and some of the developers shared in very early years some rather fundamental notions about the nature of law and the character of development. तो 1980 की दहाई में एक बहुत ज्यादा आपको हमें एक प्रोलिफरेशन नजर आई लॉ रिफॉर्म प्रोजेक्ट की ऑन न्यूलिबरल आइडियाज. न्यूलिबरल आइडियाज मैं आप इसके ऊपर एक और अलग से भी वीडियो बना लूंगा. लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, न्यू लिबरल से मुराद आपकी ये है जिसके अंदर इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि आप कम से कम लॉस क्रिएट करें जिससे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो. सो मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, ताकि आप इकोनॉमिक और ई कॉमर्स की और आपकी जो कॉमर्स की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम रहे. सो दीज प्रोजेक्ट सपोर्टेड लिबरल रिफॉर्म सच एज प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड विद द एम्फेसिस ऑन रूल ऑफ लॉ. So substantial investment were made on these projects by international development agencies जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक है, यूएसएड है और बहुत सारे पब्लिक एजेंसीज हैं और प्राइवेट फाउंडेशन है जिन्होंने इस लॉ रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स को बहुत प्रमोट किया. लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत आया. इट वाज सेड दैट दीज लॉ रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स वर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग इनइफेक्टिव और कॉजिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट इन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड. अब वो किस तरह की तनकीद थी और किस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ रहा था इन लॉ रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स को, वो कुछ 3 कैटेगरीज में आता है जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं. मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि तीनों कैटेगरीज कौन सी हैं. सो द 3 मेन क्रिटिक्स वर द क्रिटिक ऑफ यूनिवर्सैलिटी. अब इससे मुराद क्या है? जिसके अंदर यू कैन नॉट मेक यूनिवर्सल लॉ जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये रिफॉर्म, ये देयर कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट अप्रोच जिसके अंदर हर कंट्री को, हर डेवलपिंग कंट्री को आप एक ही रेसिपी दें एंड यू एक्सपेक्ट के सडनली आउट ऑफ द ब्लू दीज कंट्री विल इमर्ज एज बीइंग डेवलप्ड कंट्रीज अगर आप एक ही अप्रोच के साथ जाएंगे. सो दिस वाज वन ऑफ द क्रिटिक कि यू कैन नॉट जस्ट मूव फॉरवर्ड विद जस्ट वन अप्रोच और एक्सपेक्ट करें कि आप सारी कंट्रीज उस तरह से डेवलप कर लेंगे. And this was happening with the law reform project. So the critique of formal law's potency, so disregarded the significance of informal alternatives. बहुत सारे ममालिक के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमीज हैं, इनफॉर्मल जराए से रिफॉर्म की भी तरीके निकल के आते हैं, लेकिन इस लॉ रिफॉर्म प्रोजेक्ट के अंदर this was minimized and the assumption was कि जो only idea and the only way to reform was through लॉ एंड रिफॉर्म. वेयर एज जो डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसके अंदर बहुत सारे इनफॉर्मल जराए भी आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उनको भी बरूए खातिर लाना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप अपनी माशरे की तरक्की कैसे कर सकते हैं. सो देन इक्वालिटी ऑफ लीगल रिफॉर्म इज द थर्ड क्रिटिक जो कि हमें बहुत मिलती है मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में, जिसके अंदर एम्पावरिंग एलीट्स एंड कंटेनिंग प्रोटेस्ट. द आइडिया बिहाइंड लॉ रिफॉर्म प्रोजेक्ट इज दैट एवरीवन शुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, everyone should come under the framework of law, जिसके अंदर बहुत कम पावर मिलती है प्रोटेस्ट को, बहुत कम पावर मिलती है माइनॉरिटीज को. तो दैट इज व्हाई दिस इज मोर ऑफ अ क्रिटिक कि अगर आप इतनी ज्यादा लॉ क्रिएट कर देंगे तो ये जो प्रोटेस्ट की स्पेस है उसको आप श्रिंक करते जा रहे हैं, और ये जो जिनके पास पावर है और इन द पावर इन स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय स्मॉल सेट ऑफ एलीट, सो आप उनको और एम्पावर कर रहे हैं, यू आर आल्सो कंटेनिंग प्रोटेस्ट. So these were some of the critiques, और ये बड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है लॉ एंड डेवलपमेंट का. मैं और भी वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में और लॉ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ूंगा, बताऊंगा, बट लेकिन अब तक के लिए इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.